ऑडियो वीडियो क्लियर अछि? चलो, वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या। अड्डा ओडिया प्लेटफॉर्म तुम समस्त को बहुत 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 स्वागत। आज किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर। आज हम साइंस रो क्वेश्चन डिस्कशन करबा। 50 क्वेश्चन आनी छी, तो 50 क्वेश्चन चलो अब टाइम वेस्ट न कर रैपिड फायर टाइप डिस्कशन करबा। तुम प्रॉपर आईडिया आसीबो। जदी ए टाइप रो क्वेश्चंस आसे ताले मु निश्चित रूप रे एग्जाम अटेंड कर परबी। आज रेलवे रो किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आनी छे जोड़ा हम एग्जाम पाई बहुत हेल्पफुल हो। तो टाइम वेस्ट न कर चलो सेशन को स्टार्ट करबा। RRB ऐप जदी तुम ए पर्यंत इंस्टॉल करनो ऐप को इंस्टॉल करी क्लास के ऐप थ्रू कंटिन्यू कर पारे। जो टेलीग्राम चैनल तुमन अपडेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करछल चाडा बडे टेलीग्राम चैनल जो माने वर्तमान पर्यंत टेलीग्राम चैनल जॉइन करनो जॉइन कर दबो। जो यूट्यूब चैनल तुमको मस्त कनेक्ट करछि ऑल ओवर ओडिसा एते सारा भल पाए प्रत्येक दिन जो यूट्यूब चैनल मते प्रोवाइड करे से RRB ओडिया यूट्यूब चैनल जो चैनल सब्सक्राइब कर दो। सेशन को स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन, पोलियोमाइलिटिस कथा देला बिलान। पोलियोमाइलिटिस इज नोन एज पोलियो caused by enterovirus which causes like paralysis of muscle. This virus has a particular affinity to death. तो प्लान पछले जो पोलियोमाइलिटिस ता जेके हमें पोलियो हमें कहउछंदी क्लियर की। तो ए जो भाइरस ता पोलियो भाइरस ता को पार्ट टू अफेक्ट करता है? मसल सेल, नर्व सेल, स्पिनल कॉर्ड, नर्व सेल और ब्रेन, नॉन ऑफ द अबव। ए भीतर कोन सेट नो तो को पार्ट को अफेक्ट करता है ना हम जानि रखा दरकार। ये नर्व सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल को अफेक्ट करता है कि ना जो लाइक पोलियो भाइरस था प्लान बाइक्यूट पोलियोमाइलिटिस जदी डिजीज कहबा एंटीरियर हॉर्न मोटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन स्टेम कॉज्ड बाय पोलियो भाइरस। ऑल डन प्लान तो तुम समस्त परफेक्ट लागे बंद रखा पोलियो भाइरस ता काहा को लाइक डैमेज कर दे नर्व सेल और स्पाइनल कॉर्ड प्लान which so among globulin, albumin, gluten and collagen which protein abundant in egg? ए भीतर कोटा अधिक परिमाण अंडा रछ एग रे को प्रोटीन अधिक परिमाण अछि? ग्लोबुलिन असला, अल्बुमिन असला, ग्लूटेन असला एंड कोलाजन असला। तो ए भीतर को प्रोटीन व्हिच प्रोटीन इज abundant in egg? एग रे को प्रोटीन अधिक अछि? अल्बुमिन दा अधिक अछि प्लान। अल्बुमिन इज मोस्ट abundant in egg प्लान। अल्बुमिन दा अधिक कोड अछि ना एग रछ प्लान। अल्बुमिन इज ए like family of globular proteins are water soluble, moderately soluble in concentrated salt solution and experience heat like हमें जदि कहबा denaturation प्लान। ऑल डन। तो बस सबसे परफेक्ट मन रखा दरकार। तो अल्बुमिन दा जेटा कि ए प्रोटीन दा अधिक परिमाण रे अंडा रछ एग रछ प्लान। अल्बुमिन करेक्ट आंसर अब। प्लांट ग्रोइंग ऑन मर्सी एरिया। तो मर्सी एरिया जो प्लांट ता बढ़े तक हमें कोन कहउछन? तक हमें कोन कहउछे ना हेलोफाइट्स कहउछन। तो मर्सी एरिया जो प्लांट बढ़े तक हम हेलोफाइट्स कहउछन। हेलोफाइट्स आर दोज प्लांट व्हिच आर टिपिकली मर्सी बा हम जदि कहि परिबा लेक एड्ज एनवायरनमेंट जो प्लांट ता बढ़े तक हमें कोन कहउछे ना हेलोफाइट्स कहउछन। कोन कहउछे? हेलोफाइट्स कहउछन प्लांट। डन। Which among the following is not among micronutrient? Micronutrient required for plant. ए भीतर कोटा माइक्रोन्यूट्रिएंट नुह जोटा कि प्लांट को रिक्वायर्ड। नॉट अमंग माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट। ए भीतर कोटा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट? तो जान लो मैग्नीशियम प्ला माने in order for a plant to grow and thrive it need a number of different chemical element. Most important are carbon, hydrogen, oxygen available from air, water. Therefore like plentiful supply nitrogen, phosphorus, potassium. Three macronutrient are the like three element you find in most packaged fertilizer प्लान। देखो माइक्रो अधिक दरकार, माइक्रोडा कम दरकार। एनपीके डा जेटा हमें कहि परिबा कोन हमको मिक्स फर्टिलाइजर टा हमको अधिक दरकार पड़छ बा एनपीके डा अधिक दरकार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम डा प्लान। बट ए भितर जदी कहबा बडे माइक्रोन्यूट्रिएंट मैग्नीशियम जोटा कि प्लांट पई एते दरकार नुह प्लान। ऑल डन। तो तुम सबसे परफेक्टली मन रखा दरकार। माइक्रो तो कंफ्यूजन हबनी। माइक्रो मींस अधिक दरकार, माइक्रो मींस कम दरकार। तो माइक्रोडा जेटा कि प्लांट को दरकार नै तो मैग्नीशियम करेक्ट आंसर हबो। एडी बुझिला ना कोन कहल व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट? आंसर हबो कोन ना मैग्नीशियम करेक्ट आंसर हबो। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्ड लाइक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो को इंस्ट्रूमेंट द्वारा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को मेजर करा जाए जानिछ सिग्मो मानोमीटर। बा हम जदी का जो ब्लड प्रेशर ता
का द्वारा मेजर कर जना सिग्मा मानोमीटर इंस्ट्रूमेंट द्वारा ही पिलाने ब्लड प्रेशर को मेजर कर तो सिग्मा मानोमीटर करडा चलो in which form is the work done in stretching a wire stored as तो पिलाने जदि का वायर को मु स्ट्रेच करछि तो को एनर्जी रा स्टोर था ना पोटेंशियल एनर्जी करेक्ट आंसर हबो तो पोटेंशियल एनर्जी गोटे स्ट्रेच वायर स्टोर था तो पोटेंशियल एनर्जी प्लान द स्ट्रेचिंग ए वायर वर्क is done against internal restoring forces पिला माने this work is stored in the wire as elastic potential energy it is also known as strain energy plan the potential energy stored tha like stretched wire plan which of the following is correct about electromagnetic wave plan ebitur koda electromagnetic wave example they cannot travel through vacuum electromagnetic wave only travel through gases none of the above they require solid medium to travel plan to pachala which of the following is correct about electromagnetic wave pilan janicho electromagnetic wave ta pila mane travel kari paranti vacuum re they can travel through vacuum kana electromagnetic wave देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें का कहबा ना जो वेव टा वैक्यूम रे प्रोपेगेट हेता है देखो जदि हम देखिबा मैकेनिकल वेव आर ऑफ हाउ मेनी टाइप फर्स्ट वन इज योर मैकेनिकल वेव मैकेनिकल नेक्स्ट होची कोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अच्छा मैकेनिकल वेव टा ये कोन दरकार कर ना मीडियम electromagnetic wave ta does not require any medium दरकार करेनी क्लियर कि इवन वैक्यूम रे भी प्रोपेगेट है आंसर कोन बेटा आंसर हबो दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम व्हाट इज meant by calorimetry तो calorimetry द्वारा कौन मेजर करा जाए तुम जाने रखा दरकार मेजरमेंट ऑफ हीट को मेजर कर कैलोरीमेट्री पिलाने तो कैलोरीमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ हीट पिलाने तो जो डिवाइस हीट को मेजर कर तो हमें कैलोरीमीटर भी कहउछंदी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बॉइलिंग प्रोसेस पिलाने ये बॉइलिंग प्रोसेस ना को टाइप रो चेंज एडियाबैटिक आइसोथर्मल ना आइसोजोरिक ना ना तो हम जानछे बॉइलिंग टा गोटे को टाइप प्रोसेस ना यूज आइसोथर्मल प्रोसेस प्लान आइसोथर्मल चेंज हम कह परिबा बॉइलिंग एंड मेल्टिंग बोथ आर एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस बिकॉज़ टेंपरेचर इज कांस्टेंट कोन हबो आइसोथर्मल करना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट आल्सो नोन एज फारसाइटनेस दूरदृष्टि क्लियर कि काहा को ना हाइपरमेट्रोपिया को फारसाइटनेस को आसे नियरसाइटनेस मायोपिया फारसाइटनेस हाइपरमेट्रोपिया आंसर हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट आंसर होता हमें देख परिबा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हिसाब रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल तो पुपिल रो साइज को आई रो को पार्ट टा कंट्रोल कर साइज ऑफ पुपिल कंट्रोल बाय पुपिल रो साइज को कंट्रोल करके ना कंट्रोल कर इरिस प्लान तो इरिस जे कि पुपिल रो साइज को कंट्रोल करे तो साइज ऑफ पुपिल इज कंट्रोल्ड बाय इरिस तो इरिस ही कोन ना पुपिल रो साइज को कंट्रोल करे ना नहीं चलो नेक्स्ट Which of the following atomic property was used by Dmitry Mendeleev to arrange the element into his periodic table? तो देखो Mendeleev's periodic table जो दिखाई परिबा Mendeleev periodic table दा table periodic function of atomic masses रो periodic function Mendeleev periodic table plan Mendeleev periodic table is a periodic function of atomic masses आ मोस्टली करो पा जदी कहबा मॉडर्न periodic table दा कार periodic function periodic function of atomic number done what is atomic mass what is atomic number Mendeleev जेतु पचला एटा कोन हबो atomic masses पर atomic weight पे हम कह पारे आंसर ऑफ atomic weight तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर नंबर
So branch of science that deals with the study of the mental like faculties of the brain including emotion is known as this. Emotion I will कहबा branch of science that deals with the study of mental like faculties of the brain including emotion called as this ताको हम कोन कोचे like phrenology कोचन phrenology कोसे phrenology correct answer. Who among the following first discovered process of digestion तो digestion process के discover करतले विलियम बेमोंट को द्वारा digestion process को discover करायतले. What are plants without seed having vascular tissue seed न था but vascular tissue था seed न था but vascular tissue था ताको हम कोन कहबा ताको हम pteridophytes कहबा जोटा कि seed न था but vascular tissue था vascular tissue that means xylem phloem था ताको हम pteridophytes कहबा तो आंसर pteridophytes. Coconut milk contain a like a cytokinin called dash which promote plant growth plan तो cytokinin टा कौन जोटा कि plant growth रे help करे. Coconut milk contains a cytokinin called dash which promote plant growth जो कि plant growth को promote करे. कौन है एटा ना तुम जानि रखा दरकार सेटा कोन ना लाइक जेटिन प्लामन जेटिन गोटे प्लांट ग्रोथ हार्मोन प्लामन ठीक अछि जेटिन जदि कहबा गोटे प्लांट ग्रोथ हार्मोन काउंट अंडर आसे साइटोकिनिन फैमिली अंडर आसे इट इज ए लाइक प्यूरिन ring structure with a side chain that contains like hydroxyl amino and olefin group पिला माने simply तुम मन रखा दरकार एटा कोन ना गोटे ग्रोथ हार्मोन जेटिन प्लांट जो प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करे. What part of the like nephron is responsible for blood pressure driven filtration पिला माने देखो जदि कहि परिबा what part of the nephron is responsible for blood pressure driven filtration तो blood filtration टा काज रहता है देखो nephron टा हम जानि रखा दरकार होछ कोन ना functional unit of kidney nephron clear and nephron रो जो glomerulus अछि गोटे complex structure अछि that is glomerulus होछ कोन glomerulus तो complex structure ये जो ग्लोमेरुलस नहीं कोन है ना ब्लड ऑफ फिल्ट्रेशन दा आंसर हो कोन ना ग्लोमेरुलस करेक्ट आंसर हो तो आंसर हमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीजेनरेटिव डिजीज प्लान ए भितर कोडा कोडा डीजेनरेटिव डिजीज नो तो ओबेसिटी रा कोन डीजेनरेटिव डिजीज की नहीं तो ओबेसिटी करेक्ट आंसर हो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एज ए न्यूट्रिएंट तो ए भितर के मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को एज ए न्यूट्रिएंट व्यवहार करे के पिला माने मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को एज ए न्यूट्रिएंट के व्यवहार करे की व्यवहार कर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को एज ए न्यूट्रिएंट तो से होची राइजोबियम तो राइजोबियम used molecular nitrogen as a nutrient plant it is one of the vital symbiotic nitrogen fixing bacteria पिला माने ऑल्डन जी की molecular nitrogen को एज ए न्यूट्रिएंट ग्रहण करे प्लांट. wilting of plant occurs due to excessive of dash तो प्लांट रे wilting के तलब तो अधिक ट्रांसपिरेशन हो प्लांट रे wilting हो तो आंसर हो ट्रांसपिरेशन अधिक ट्रांसपिरेशन हो प्लांट रे wilting हो. One of the best solution to get rid non-biodegradable waste is test. तो हमें non-biodegradable waste ता पिला माने ताको जदि हम कहि परिबा किपरि हमें ताको डिग्रेड करबा तो obviously हम कहि परिबा कोन ताको हम जदि कहबा non-biodegradable waste so कि कोन डिग्रेड हुए नि अपघटन हुए नि ताको हम कोन रिसाइक्लिंग करबा काहे कि जदि कहबा गोटे प्लास्टिक आसला हला गोटे पॉलिथीन आसला रिसाइकल कर दबा ताको यूजफुल आइटम रा हमें कन्वर्ट कर दी पारे आंसर रिसाइक्लिंग हो. अच्छा व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉज्ड बाय वायरस ए भितर कोटा वायरस तरा ही न थाए देखो जदि कहबा लाइक पोलियो दा वायरस सेकंड पॉक्स दा वायरस इन्फ्लुएंजा दा वायरस बट टाइफाइड दा वायरस के नहीं टाइफाइड ता जो बैक्टीरियल डिजीज ना नहीं सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया दा टाइफाइड तो टाइफाइड ता गोटे बैक्टीरियल डिजीज ए वायरल डिजीज नो. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप ए भितर कोटा रबी क्रॉप नो मस्टर्ड ग्राम राइस व्हीट तमे जानि रखा राइस ता गोटे रबी क्रॉप नो प्लान गोटे खरीफ क्रॉप ना ऑल्डन तो तुम समस्त परफेक्टली को मन रखा दरकार राइस ता गोटे खरीफ क्रॉप ता रबी क्रॉप नो प्लान. अच्छा which feature of the cell allow or permits the entry and exist of some material in and out of the cell प्लान तो कहा द्वारा डिफरेंट मटेरियल्स सेल भीतर एंट्री करता है और सेल रु एग्जिट होता है कहा द्वारा पिला माने तमे समझ जानि रखा दरकार कहा द्वारा नाही होची नाम कहबा साइटोप्लाज्म गोटे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉरी बुझ परले कोन हला सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी
एटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हबो जेटा कि हम कह सेल मेम्ब्रेन भी कहू तो सेल मेम्ब्रेन द्वारा ही कोन थाए ना डिफरेंट मटेरियल रो एक्सचेंज हेते एक्सट्रीमली सॉरी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हबो जे सेल मेम्ब्रेन कहउछंती माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो देखिया से गुटे माने कोन एनिमल सेल आउटर कवरिंग टा सेल मेम्ब्रेन टा जे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहउछंती प्लांट सेल आसले सेल वाला आस्थांदे जे एनिमल सेल तो ऑब्वियसली इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेक्ट आंसर हबो राइपनिंग ऑफ फ्रूट इथिलीन टा कोन लाइक को राइपनिंग हार्मोन ना पिला माने इथिलीन टा तो का द्वारा फ्रूट राइपनिंग हेता इथिलीन द्वारा फ्रूट राइपनिंग हेता Which of the following element is not a alkaline earth metal? ए भितर कोड alkaline earth metal नुह is not a बचला is not an alkaline earth metal तमे जानि छे beryllium टा बडे alkaline earth metal नुह is not an alkaline earth metal तो beryllium तो element of group to include beryllium magnesium calcium strontium barium radium these element with the exception of beryllium like commonly known as alkaline earth metal plan अच्छा which of the following is not a compound of carbon एबितर कोडा कार्बन रो कंपाउंड नो सिनाबार एसिटिक एसिड क्लोरोफॉर्म मीथेन तम जानि रखा दरकार कोडा सिनाबार ता कोन कार्बन रो कंपाउंड नो प्लान एसिटिक एसिड क्लोरोफॉर्म मीथेन रे कार्बन अछि बट सिनाबार कार्बन नाही पिला माने ऑल्डन तो सिनाबार ता कार और मर्क्यूरी सल्फाइड को आसे मर्क्यूरी रो कोइ पारे सिनाबार तो सिनाबार ता कार्बन कंपाउंड नो व्हाट इज द रेशियो रिलेशन बिटवीन बेक्यूरेल एंड क्यूरी क्यूरी और बेक्यूरेल रो रिलेशन डा कोन क्यूरी एंड बेक्यूरेल रो रिलेशन जो देखियो तो relation between curie and becquerel जो देखा 1 curie is equal to 3.7 into 10 to the 10 becquerel plan 3.7 into 10 to the 10 becquerel होची कोन 1 curie तो 1 curie केते 3.7 into 10 to the 10 becquerel plan 1 curie टा ऑल डन बुझिलो 1 curie केते becquerel 3.7 into 10 to the 10 becquerel plan अच्छा what percentage of human body is made up of carbon तो बॉडी रो केते परसेंट टा कार्बन तो कार्बन जो देखिबा 18.5% अराउंड 18.5% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन तो कार्बन दा केते परसेंट ना 18.5% प्लान ह्यूमन बॉडी रो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस तो वायरस स्टडी वीरोलॉजी तो वीरोलॉजी होची स्टडी ऑफ वायरस तो स्टडी ऑफ वायरस वीरोलॉजी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जानिचो 23 पेयर एंड 46 अच्छा इट पछा टोटल नंबर ताले 46 हबो पेयर देथंदा 23 थंदा ताले 23 हबो कि नहीं 46 करेक्ट आंसर हबो ऑल डन तो 46 भितर हम जदी कहि परिबा कोन ना हम जदी ऑटोजोम होची 12 पेयर आ गोटे होची सेक्स क्रोमोसोम डा ना नहीं गोटे पेयर होची कोन सेक्स क्रोमोसोम बाकी 22 पेयर होची ऑटोजोम द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस जानिचो थाइलाकोइड होची कोन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस थाइलाकोइड टा होची कोन ना फोटोसिंथेसिस रो स्ट्रक्चरल थाइलाकोइड कहि करेक्ट आंसर व्हिच फ्रूट प्रोड्यूस्ड बाय लाइक पार्थेनोकार्पी तो पार्थेनोकार्पी द्वारा ए भीतर को फ्रूट टा प्रोड्यूस ना बनाना डा पार्थेनोकार्पी द्वारा प्रोड्यूस होता है प्लांट अच्छा तो कस पार्थेनोकार्पी डा कोन आपण क्लियर कर दियन पार्थेनोकार्पी कोन व्हाट इज पार्थेनोकार्पी तो पार्थेनोकार्पी लाइक रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन जोटा विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है देखो पार्थेनोकार्पी कहउछन तो पार्थेनोकार्पी रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन हला तो एटी बनाना डा कोन ये कोन होछ गोटे पार्थेनोकार्पी कहि पर बनाना फ्रूट प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोकार्पी अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज नेमाटोड्स ए भीतर कोडा नेमाटोड्स को नेमाटोड्स ए भीतर कोडे का नेमाटोड्स को नेमाटोड्स से आसला राउंड वर्म को नेमाटोड्स को संती द राउंड वर्म इज आल्सो कॉल्ड एज नेमाटोड प्लांट ऑल डन ठीक अछि एंड द नेमाटोड्स आर द मोस्ट अबंडेंट एनिमल ऑन अर्थ ला माने ऑल डन बुझियलो which disease is contagious chronic and usually fatal infection that primary affect the small intestine of ruminant तो ruminant animal माने जो माने घास खाते से माने small intestine के भितरु को डिजीज ता अफेक्ट करता है को डिजीज रे ruminant animal मानकर small intestine अफेक्टेड होता है ruminant animal मानको small intestine अफेक्ट होता है बिलाने को डिजीज रे कोइ परिबो को डिजीज रे को डिजीज रे नाम जानि रखा दरकार लाइक जॉन्स डिजीज प्लान जॉन्स डिजीज तो जॉन्स डिजीज गोटे कंटाजियस क्रोनिक एंड यूजुअली फटल इन्फेक्शन दैट प्राइमरली अफेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ रुमिनेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जीएम क्रॉप इन इंडिया तो प्रथम जीएम क्रॉप टा कोडा जीएम क्रॉप टा कोन तो हम जानि छे जीएम क्रॉप टा प्रथम टा ब्रिंजल डा आसना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप टा तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप टा कोडा प्रथम ब्रिंजल बायगण स्लीपिंग सिकनेस डिजीज स्प्रेड ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनसेक्ट तो कहा द्वारा स्लीपिंग सिकनेस टा स्प्रेड होता है स्लीपिंग सिकनेस टा कादो स्प्रेड होता मींस कोइ पारे वेक्टर टा कोडा स्लीपिंग सिकनेस रो वेक्टर टा कोडा वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस कोइ पारे
vector of sleeping sickness तो vector of sleeping sickness जदि कहबा मन रख टीसी फ्लाई होची कोन vector of sleeping sickness रे अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस भी कोआसे sleeping sickness भी कोआसे स्प्रेड हेता कादरा ना टीसी फ्लाई तोरा प्लान ऑल डन अच्छा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड ए भितर को एनिमल भितर हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाइबा देखो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज ओपन हमर कोन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बट एटी पचला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें को एनिमल केतरे पाइबा प्रॉन एर्थवर्म टोड या मैन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पचला तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जदि कहि परिबा तो मन रखा दरकार प्रॉन तो प्रॉन रो हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाइबा प्रॉन which among the following was the first vaccine ever to be developed तो प्रथम वैक्सीन दा जो डेवलप होइतला प्रथम वैक्सीन तो जानछो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डेवलप होइतला स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डेवलपर के थिले एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी मध्ये हम कहउछन्ती what is which of the following cell is present in epidermis that surrounds like stomatal pore in plants पिला माने तो which of the following cell present in the epidermis that surrounds the stomatal pore in plant कौन आसबो which of the following cell present in the epidermis that surrounds stomatal pore in plant मन रखियो god cell correct answer god cell which branch of biology known as study of flowers so flower study pathology कोसन तो कोन pathology correct answer study of flower ना नहीं dendrology ये होछ कोन like study of tree agrostology grass अच्छा जदि कहबा which branch of biology is known as the study of internal body structure तो internal body structure study का में कोन कहउछे study of internal body structure तो पर anatomy biometrics pathology none of this कौन आंसर तुम जानी रखा दरकार एटा होची कोन एनाटॉमी ना वेरी गुड एनाटॉमी अच्छा दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज रेस्पोंसिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग तो को प्लाज्मा प्रोटीन दा रेस्पोंसिबल का पे ना ब्लड क्लॉटिंग पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज रेस्पोंसिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग कह परिबो क्यों प्लाज्मा प्रोटीन दा रेस्पोंसिबल ब्लड क्लॉटिंग पे कोडा जैसे होची fibrinogen तो fibrinogen is a protein produced by the liver this protein helps to stop bleeding and helping the blood clot form पिला माने अच्छा मत कहलो one on average how many liters of urine does a normal adult excrete per day गोटे normal adult केते लिटर यूरिन को एक्सक्रीट करथे पर डे केते लिटर यूरिन ता एक्सक्रीट हेते पर डे गोटे नॉर्मल एडल्ट द्वारा गोटे नॉर्मल एडल्ट द्वारा केते लिटर यूरिन ता एक्सक्रीट हेते केते लिटर यूरिन एक्सक्रीट हेते तो मन रखा दरकार 1 to 1.5 लिटर 1 to 1.5 लिटर अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो ए भितर पिट्यूटरी ग्लैंड ता काहा से अटैच हेछि पिट्यूटरी ता काहा से अटैच हेछि बिला पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो काहा से पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच हेछि कोई परिबो काहा से अटैच हेछि पिट्यूटरी ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो जानि रखा दो हाइपोथैलेमस हला तो हाइपोथैलेमस को हम कोचन मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कह जाय ना कहना पिट्यूटरी ग्लैंड रो किछ हार्मोन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करे ओवरी इज सराउंडेड बाय थिन कवरिंग कॉल्ड एज टेस्ट तो ओवरी रो आउटर कवरिंग को कोन कहसे
आउटर कवरिंग को कौन कहा से एपिथेलियम कहा से तो एपिथेलियम आउटर कवरिंग ऑफ ओवरी प्लान एपिथेलियम आउटर कवरिंग ऑफ माने कौन मैं कहि परिबा ओवरी प्लान एपिथेलियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन ड्यूरिंग मिल्किंग तो मिल्क माध्यम रे ह्यूमन को ट्रांसमिट होता डिजीज ता कोडा कोडा ह्यूमन को ट्रांसमिट होता भीतर को डिजीज थी ह्यूमन को ट्रांसमिट हो मिल्किंग माध्यम रे तो जानी रखा दरकार कोन आंसर आंसर हो काउपॉक्स तो काउपॉक्स डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन ड्यूरिंग मिल्किंग पिलाने काउपॉक्स कोड इन्फेक्टियस डिजीज कॉज्ड बाय द काउपॉक्स वायरस वेरी गुड नेक्स्ट अच्छा लासा एंड एबोला गुड एमर्जेंट वायरस वेस्ट अफ्रीका रो व्हाट इज देयर ओरिजिन तो को क्षेत्र फर्स्ट लासा एंड एबोला वायरस तो देखा दितला का क्षेत्र देखा दितला प्रथम लासा एंड एबोला टा तो लासा एंड एबोला जदि कहबा प्रथमे फ्रूट बर्ड केते देखाय लासा एंड एबोला आर एमर्जेंट वायरस इन वेस्ट अफ्रीका originated by the fruit bat ebola like a hemorrhagic fever caused by ebola virus infection plan अच्छा what is the reason for formation of mirage in desert desert जो mirage formation होता है mirage ता जेका हम जानि छै कोन जेका हम मरीचिका कहउछन तो कहा द्वारा mirage ता होता कह परिबो mirage mirage तो मिरेज ता जानछो प्लाने बोथ रिफ्रैक्शन और टोटल इंटर रिफ्लेक्शन द्वारा मिरेज ता हेता देखो अब रिफ्रैक्शन कोन व्हाट इज रिफ्रैक्शन की कोइ परिबा रिफ्रैक्शन तो लाइट गोटे मीडियम रो अदर मीडियम जाय सो एग्जांपल लाइट कोन करछि गोटे डेंसर मीडियम एरर मीडियम जाय पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइट कोन होछि ना दूरे जाउछि लाइट रो बेंडिंग नेचर का हमें रिफ्रैक्शन कहले ना नहीं बेंडिंग नेचर ऑफ लाइट आकमे रिफ्रैक्शन कहछन लाइट कोन होछि गोटे मीडियम अदर मीडियम जाय कहबी होछि डेंसर होछि रेयर लाइट तो डेंसर रो रेयर को जाउछि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइट बेंड करूछि लाइट जो बेंडिंग नेचर का में रिफ्रैक्शन कहछनी ना नहीं समटाइम जो कहबा एंगल ऑफ इंसिडेंस तले बढ़ुछि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ता कम बढ़िबो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ला जो लाइक इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड डेटा एंगल से तो लाइक नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता कमे क्रिटिकल एंगल कहछनी इंसिडेंट एंगल और भी बढ़िबो ताले कोन ना से जो रिफ्रैक्टेड रेटा फर्स्ट डेंसर मीडियम रिफ्लेक्ट पे कैसे देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहछनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहले आउथरे करू देखो मन दे सुनो ये होची कोन तो लाइट गोटे मीडियम अदर डेंसर एरर को जाउची कोन लाइट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बेंड करछ लाइट रो बेंडिंग नेचर का में रिफ्रैक्शन कहले तो हमें जो इंसिडेंट एंगल को बढ़ेबा रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ेबा इंसिडेंट एंगल बढ़े रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ला जो इंसिडेंट है रिफ्रैक्टेड है नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता क्रिटिकल एंगल कहछन तो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल थर बढ़िला ताल से जो इंसिडेंट है रिफ्रैक्टेड है रिफ्रैक्टेड न होई फर्स्ट टेंसर मीडियम रे रिफ्लेक्ट बेस होता कमे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ताले मिरेज ता कादरा क्रिएट होता है ना हमें कोई बा रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोड आंसर हो द मेथड नॉट यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल ए भीतर कोडा बायोलॉजिकल कंट्रोल न हो तो जानि छे यूज ऑफ लाइक हम जदी कहबा पेस्टिसाइड तो पेस्टिसाइड ता रो व्यवहार केमिकल कंट्रोल थोड़ी बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं यूज केमिकल कंट्रोल तो एटा बायोलॉजिकल कंट्रोल न इतला आज रो क्लास रो पीडीएफ टेलीग्राम रो पाइजो टेलीग्राम स्कैनर को स्कैन कर जॉइन करो ग्रुप डी बैच बीएड एंट्रेंस रो बैच तेजस्वी ओपीएससी एसओ रो बैच सेक्सुअल एसएसबी जूनियर स्टैंड ता से हमरो स्टेट एग्जाम महापेक्स सहित पिला माने जोटा करंट अफेयर बुक अछि तो आको नेला बेले गोटे कोड यूज करो व्हाइट वेट पान मैक्सिमम डिस्काउंट पा हला सेशन को समस्ते लाइक करिवो शेयर भी करिवो वैल्यूएबल कमेंट्स सब्सक्राइब कर देखा नेक्स्ट क्लास धन्यवाद।